Good morning, students, and welcome. In the last lecture, we were talking about the Air Force Marshal Arjun Singh, an icon of the Indian military history. He was a he successfully led the IAF during the 1965 Indo-Pak War. He played the major role in making the IAF one of the most powerful air forces in the world. Okay. He was not only the fearless and exceptional pilot, but he also had a deep knowledge of air power, which he applied everywhere where necessary. He was a perfect example of the military leadership. It is for this reason that he is considered an outstanding personality. We are talking about him. He got the recognition. He was distinguished flying officer of DFC. In 1944, Arjun Singh led a squadron against the Japanese during Arakan. Okay, Arakan campaign. He flew close air support mission during the crucial Imphal campaign. He then assisted the advance of the Allied forces of Rangoon. See over here. Advance of the Allied forces of Rangoon. In recognition in this feat, Arjun Singh was given the DFC award. It is mentioned over here with okay. He was born on April 15, 1919 in Lailpur, non-Faisalabad, Pakistan, and completed his education in the Montgomery, now Sahiwal in Pakistan. Okay, this is the name of the in back it is called as Montgomery. Now it is called Sahiwal. That is a part of the Pakistan. Okay. So we were talking about it. We have completed up to here about the flight pass, that is a ceremonial flight of the aircraft passing over a place. मतलब जहाँ on 15th August and all we can see that उनका aircraft का एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाया जाता है over the sky. करतब वगैरह दिखाए जाते हैं planes के. After his promotion to the rank of the King Commander, he attended the Royal Staff College at the UK immediately after Indian independence. He commanded Ambala in the rank of Group Captain. In 1949, he was promoted to the rank of Air Commodore and took over his Air Officer Commanding AOC of an operational command which later came to be known as the Western Air Command. एयर ऑफिसर कमांडिंग का उनको ये मिला ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड विच लेटर केम टू बी नोन एज द वेस्टर्न एयर कमांड. Singh had the distinctions of having the longest tenure of AOC as an operational base. मतलब ये जो longest tenure मतलब वो काफ़ी देर तक वहाँ पे AOC का पोस्ट में थे, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ. इनिशियली 1949 से लेके 52 तक एंड देन अगेन 57 टू 1967 वो AOC का पद संभाल रहे थे. आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ द एयर वाइस मार्शल ही वॉज अपॉइंटेड एज ए AOC इन सी ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड. यानी इतने अच्छे कुशल ये थे ऑफिसर थे, इनको 2 बार AOC का इंचार्ज वगैरह बनाया गया था 1949 to 52 and 57 to 1967. After that again promotion was given to the rank of Air Vice Marshal. He was appointed as AOC in C of an operational command. Towards the end of the 1962 war, he was appointed as the Deputy Chief of the Air Staff and became the Vice Chief of the Air Staff in 1963. End of 1662 के war के time को again he was appointed as a Deputy Chief of the Air Staff. Okay. And became the Vice Chief of the Air Staff. Air Staff का जो ये है उस पर Vice Chief के पद पे उन्हें नियुक्त किया गया था. He was the overall commander of the joint air training exercise Shiksha held between IAF and RAAF, Royal Australian Air Force. He was the
कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग, वो कमांडर हुए थे। On August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjun Singh, took over the reins of IAF at the time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. Means फिर से वो the rank of Air Marshal का the Marshal of Air Force Arjun Singh took over the reins, मतलब उन्होंने उसका पद संभाला of the IAF जब वो अपने आप को मतलब उसकी ग्रोथ हो रही थी, इट वॉज स्टिल ग्रोइंग एंड फॉरवर्ड, काफ़ी सारे चेंजेस उसमें आ रहे थे। ही वॉज एट दैट टाइम ही वॉज द एयर मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। Singh was the first air chief to keep his flying currency till his CAS rank. Having flown over the 60 different types of aircraft for pre-World War II era biplanes to the more contemporary Gnats and Vampires, he also flown in transport aircraft like the Super Constellation. मतलब ये फ्लोन ओवर द 60 डिफरेंट टाइप्स, 60 अलग अलग तरह के प्लेन्स उन्होंने चलाए हैं उसके साथ एयरक्राफ्ट में, फ्रॉम द प्री वर्ल्ड वॉर यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले से लेके हेरा टू बाई प्लेन्स टू द मोर कंटेम्प्रेरी नट्स एंड वेम्पायर। ही ऑल्सो फ्लोन टू द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक अ सुपर कॉन्स्टेलेशन। Singh was the first air chief. Okay, fine. It is 1965 when Pakistan launched its open operations Grand Salman with an armored thrust targeted at the vital town of Akhnor. Singh led IAF through the war with courage, determination and professional skills. He inspired IAF to victory despite the constraints imposed on the full scale full of Air Force combat power. मतलब 1965 में when Pakistan launched in the operation against us, so that time he was leading us, the IAF. Singh was leading IAF through the war with the courage. पूरा जो war जब चल रहा था 1965 against the Pakistan, तब वो IAF के लीडर थे और उन्होंने काफ़ी करेज और डिटर्मिनेशन और अपने प्रोफेशनल स्किल्स से विक्ट्री हमें हासिल करके दी। Singh was awarded Padma Vibhushan for his astute leadership. See the meaning of the astute, sharp and intelligent. Okay. Singh was awarded at Padma Vibhushan for his astute leadership of the Air Force during the war. Subsequently, in recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of CAS was upgraded. उनका जो रैंक दिया गया था CAS का उसमें अपग्रेड किया गया, मतलब उनकी बढ़ोतरी हो गई। एंड अर्जुन सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। ही बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल। ओके, he remained a flyer to the end of his tenure in IAF, visiting forward bases and units and flying with the squadrons. He retired in August 1967 there upon accepting ambassadorship to Switzerland. मतलब उनका टेन्योर, मतलब उनका जब तक काम करने का ये था, जब तक उनका काम फिनिश वर्ड वी कैन से रिटायर जब तक नहीं हो रहे थे, he were in the IAF पोजीशन उसी में थे। he was a फ्लायर मतलब इंडियन एयर फोर्स में वो फ्लायर के तौर पे ही उधर थे टिल द उनको रिटायर, जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो रहे थे। विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन। ये रिटायर्ड इन अगस्त 1969 देयर अपॉन एक्सेप्टिंग एम्बेसडर्स। उसके बाद उन्होंने एम्बेसडरशिप ऑफ टू स्विट्जरलैंड ने एक्सेप्ट किया था। ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम December 1989 टू December 1990। यानी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे दिल्ली में कार्यरत थे फ्रॉम 89 टू 90। Okay. Having been a source of inspiration to all of the personnel of the armed forces through the years, the government confirmed the rank of the Marshals of the Air Force upon Arjun Singh in January 2002, making him the first and the only 5-star rank officer with Indian Air Force.
ओके, ही वॉज द ओनली पर्सन टू हैव 5 स्टार रैंक ऑफिसर, जो कंधे पे स्टार्स वगैरह होते थे मिलिट्री वालों को दी जाती है. ही वॉज द ओनली पर्सन टू हैव द 5 स्टार रैंक ऑफिसर विद इन इंडियन एयर फोर्स. ही वॉज द चीफ ऑफ द एयर सर्विसेज एंड ऑल, एयर स्टाफ बोल सकते. तो दिस इज अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द मार्शल अर्जन सिंह. उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स उनकी लाइफ, उनके कार्यकाल के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे तरह तरह के प्लेन्स उड़ाए हैं. 1965 के वॉर्स में थे वो, इवन विद द उनकी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स थी जिनकी वजह से उनको एक बड़ा पद एयर मार्शल के तौर पर उन्होंने एयरफोर्स में अपना ये उनका अपना एक रुतबा था. उनकी अपनी एक छवि थी जो आज भी याद रखा जाता है. उनकी करेज और उनकी जो काम करने की जो ये व्हाट यू कैन से इस वे ऑफ वर्किंग एंड ऑल, उनकी dedications towards his job, his work and all, how keen he was about his work. तो ये सब चीज़ हमें इस लेसन से पता चलता है. ओके, दिस इज व्हाट अबाउट द एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह. We have completed this lesson. Many meanings are given over here. Please go through it, the question answers and all. Bye. See you in the next lecture.